Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा आनेजा डैंग। जी धन्यवाद मनोज। Yes, we begin with the headlines. Key domestic indices witnessed losses. Sensex settles below 65,000 mark. Nifty ends near 19,300 level. Pradhan Mantri Jan Dhan accounts cross 50 crores in number and Brent crude hovers around $83.77 per barrel. घरेलू शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 65,000 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी 19,300 के नजदीक आया। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ से ऊपर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $83.77 प्रति बैरल के आसपास आया। घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 202 अंक यानी 0.3% नुकसान के साथ 64,949 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55 अंक यानी 0.3% घटकर 19,310 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट हुई। The key domestic share indices ended lower in a volatile session today. The BSE Sensex closed below the 65,000 mark, while the NSE Nifty finished near the 19,300 level. Both indices declined amid negative global cues. The Sensex lost 202 points or 0.3% to end at 64,949. NSE Nifty also dropped 55 points or 0.3% to settle at 19,310. In the broader market at the BSE, the mid-cap index depreciated 0.4%, while the small-cap index marginally declined 0.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 9 companies appreciated, while those of 21 declined. Maruti rose 1%. Reliance gained 0.75% and Nestle India and Axis Bank both advanced 0.7% each. On the other hand, Tata Consultancy Services declined 2.15%, Tech Mahindra slumped 1.8% and Infosys stumbled 1.6%. Sun Pharma and Wipro both fell 1.3% each. Fell 1.35% each. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors gained while 16 logged losses. Power sector surged 1.1%, utilities sector appreciated 0.95% and service sector accelerated 0.8%. On the other side, IT sector declined 1.5% while tech index slipped 1.3% and metal sector fell 0.9%. The overall market breadth was negative as shares of 1,527 companies depreciated and 2,086 companies declined. A total of 135 shares remained unchanged. So, Mr. Bhattacharya, welcome to Akashvani and Market Mantra specifically.
Thank you for having me here. And sir, how do you explain the Sensex closing below the 65,000 mark? For a long time, it held hopes, high hopes, and optimism with hovering around 65,000 and beyond. But now it's closed a little, losing just about 202 points or 0.3%, as our report says. How significant is this loss, and what are the reasons that has caused this fall? Well, this is a reflection of what is now happening in the domestic market as well. Already there were some concerns about the manner in which the global recovery or the recession fears would play out. You have got clear signals from the global central banks, particularly the Fed in the U.S., that the interest rate hike the paces have not yet come to an end. As a matter of fact, the Fed Reserve chairperson has already indicated that interest rates may not come down for some time to come because the fight against inflation is not yet over. Even though in the UK, United Kingdom, you have seen inflation coming down, in the US, inflation coming down to as low as 3% compared to 6 or 7% a few months ago, the central bank's toughness on maintaining a hard, tough money policy, tough interest rate policy continues. So that is one area of global concern impacting on the market. But adding to that is what is happening in the domestic market, particularly on the inflation front. Yes. The latest numbers on the retail inflation reaching an 11-month high level of 6.7 plus percentage has actually, I would say, spooked the markets. And there is also genuine market fears or apprehensions that the government might step in with steps which will impede the natural flow of economic activities, a natural pace of economic activities. As a matter of fact, you would have read many statements by both the finance minister as well as the finance secretary suggesting that no quick decision will be taken, trying to allay the market sentiment, allay the market nervousness that anything drastic would be done to keep inflation under check. Why there is this concern about inflation, anti-inflation measures to be taken? Because we are heading into election season. Yes. No government will tolerate the inflation rate going above the inflation target of 4%. So that's the overall scenario in which the stock markets have behaved little nervously, going below 65,000 after several weeks. So I don't think the overall fundamental assessment of the economy has been changed, market participants, but certainly the global developments as well as the domestic assessment on inflation have actually roiled the sentiment to some extent. Can we say that blame it all on excess monsoon in many places, and also perhaps leading to the government putting curbs on the export of rice, thereby affecting many countries and big time dealers in rice? What has happened is that the monsoon has contributed to this rather apprehensive view of the market from the market participants, because there was a time when the monsoons have actually had kept pace, and July had seen a surplus. But August so far has driven the rains into a deficit zone once again, to as much as 6% deficit right now. So therefore, this doesn't augur well for the price situation once again. So therefore, the fear that the government might be forced to take some unpleasant actions like curbs on exports, or some reintroduction of supply and movement of goods within the country so that the prices remain under control. But tackling prices is not going to be an easy job, because if you look at the movement of wholesale price index on the food sector,
You see the retail price movement in the food sector, the gap has narrowed. In other words, the producer prices, the wholesale price in the food sector has gone up significantly. As a result, inflationary tendencies have almost generalized in the economy. So therefore, the food inflation is not likely to go away soon. And I think the market sentiment today and the last few days is reflecting that assessment also. इके भी यहाँ पर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि जो खाद्य मुद्रास्फीति है वह जाती हुई दिख नहीं रही। वर्तमान जो खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है उसके पीछे मुख्य कारक क्या नजर आ रहे हैं आपको? और क्या ये आपूर्ति यानी सप्लाई साइड की बाधाएं हैं उनके चलते, या कौन से वो कारक हैं जिनके चलते हम खुदरा मुद्रास्फीति में ये बढ़त देख रहे हैं, और इसका आयाम कितना बड़ा दिख सकता है अर्थव्यवस्था पर? देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो बहुत ही एक मौलिक सवाल है, और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारी अर्थनीति या मार्केट्स में जो हो रहा है वो कि पिछले एक साल से जो किसानों के जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस या खरीफ एंड रबी के जो प्राइसेस को हमें जो दिखने को मिला उसे, और इनपुट कॉस्ट जो फर्टिलाइजर में के दाम को जो है, और उससे जो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड जिसे हम प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं, जो फार्मर को जो प्राइस देना पड़ रहा है उस प्राइस में काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसीलिए मैंने कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो फूड इंडेक्स में जो है और रिटेल प्राइस के जो फूड इंडेक्स में है वो ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम देखें कि कंज्यूमर प्राइस जो बढ़ा है वो ट्रेड चैनल के लिए नहीं बढ़ा है, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट जो है वो ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मतलब ये ट्रेड मार्जिन वाली बात नहीं है। अगर ट्रेड मार्जिन की बात होती तो ये टेम्पोररी या ये क्षणस्थायी होती, पर मुझे ये लग रहा है कि ये टेम्पोररी नहीं है, और ये क्योंकि ये एक मौलिक एक बेस इफेक्ट चल रहा है इसमें होलसेल प्राइस के बढ़ने से, और इसीलिए थोड़ी बहुत घबराहट या टेंशन क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और उस तरफ अगर आप स्टॉक मार्केट की ओर देखेंगे तो जो बैंकिंग सेक्टर जो है, जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, और बैंकिंग सेक्टर की जो वेट जो है स्टॉक मार्केट में काफी बढ़ गई है, और वही फाइनेंशियल सेक्टर में जो नेट मार्जिन, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होती है जिससे कि उनकी प्रॉफिट बढ़ती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो शॉर्ट टर्म जो फ्यूचर अगले 2-3 तिमाहियों में जो इम्पैक्ट जो है वो जरा नेगेटिव दिख रहा है, तो उसका भी एक नर्वसनेस जिसलिए ये मार्केट के सेंटीमेंट में आ रहा है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 83 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में 103.50 पर चल रहा था। चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज प्रमुख बाजारों में बिकवाली का रुख दिखा है। निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.56% नीचे आ गया। हांगकांग के हिंगसेंग में 2.1% की बड़ी गिरावट आज दिखी। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.95% नीचे चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। Mr. Bhattacharya, this is a kind of a surprise. So long we've been talking about China's control all over the world. You know, so much you go to any country, developed nation, the stuff that is manufactured in China. Now we see a Chinese economy going down, supposedly. Do they need some kind of a restructuring? Is it because of their own domestic factors and they need some kind of a revamping, restructuring within China? And what is happening to yuan? Well, what is happening in China is a bit of a surprise, and one had expected the Chinese economy to bounce back
after they relaxed the COVID controls. But instead of what we have seen in the Chinese economy is that for 2 consecutive quarters, the economic output levels have hardly bounced back. On the contrary, reflective of very, very tepid demand, the price situation has reached a deflation zone. In a sense, prices are not going up. On the contrary, the prices are falling. So this is a situation with the world's second largest economy, with their exports to their major markets, whether it is the US or whether it is to Europe, they have fallen dramatically. And as you would know, that the Chinese economy is dependent a lot on exports. So the overall prospects of the Chinese economy coming back to its old ways of rapid growth are looking very, very dim. And if China, being such a large economy in the world, is going through this kind of growth deceleration and deflation, then it is bound to have an adverse impact on the economic activities of other major countries. And I would say that even India, the Indian economy, cannot remain unscathed by what is happening in China. So that's also a factor that is impacting the mood in not just the Indian stock market, but in the global market. As we just now read out, whether it is the Chinese market, the Singaporean market, Hong Kong market, the London market, the French market, or the German stock market, every stock market is seeing a southward movement in the indices. So I think this is a global situation, and the Indian story was looking better because India had managed its growth and kept its growth intact. But right now it is looking a little clouded because of the inflation outlook. So what has changed is the inflation outlook. Fortunately, our growth story still looks intact. But given what is happening to the world and the major markets, we have to be acutely conscious and watchful of how to sustain the growth momentum in the Indian economy. A lot of steps are being taken by the Indian government to make sure that the investments by the government is maintained so that the growth momentum is not adversely impacted. Right. एक भी यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस समय कोविड का प्रसार हुआ था और आपूर्ति बाधाएं पूरी दुनिया में देखी गई थी, तो चाइना +1 का एक कॉन्सेप्ट उभरा था और उसमें भारत उस गैप को भर सके और बाजार में अपनी पैठ, विश्व बाजार में अपनी पैठ बढ़ा सके, उसके लिए कई सारे उपाय भी किए गए थे, कदम उठाए गए थे और बातें बहुत सारी हुई थी। वो उस मोर्चे पर हम कितना आगे बढ़े हैं या कहाँ खड़े हैं आज की तारीख में? देखिए, अगर आप विश्व की ओर देखेंगे, चाइना +1 स्ट्रैटेजी में जी, ये स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत कामयाबी तो जरूर हासिल हुई है, पर सवाल हमारे लिए ये होगा कि इस चाइना +1 स्ट्रैटेजी की कामयाबी में भारत का कितना हिस्सा है। हमने देखा है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी का एडवांटेज वियतनाम या कोरिया, साउथ कोरिया या इवन बांग्लादेश जैसे इकोनॉमी में ये चाइना प्लस का स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया है। भारत में भी हुआ है इस्तेमाल। जैसे हमने देखा है कि जो एप्पल जैसे जो विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है, $3 ट्रिलियन की कंपनी जो है, उसने भी अपने सारे प्रोडक्शन, काफी फैसिलिटीज इंडिया में ले आए हैं और भारत के भी काफी 2-3 जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी कहिए या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को कहिए, तो उनसे ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी को साकार करने के लिए ये इंडिया में भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। पर भारत की जो जरूरतें जो इस वक्त इकोनॉमी की जरूरत जो है, वो सिर्फ चाइना +1 स्ट्रैटेजी से ही नहीं हासिल हो सकती है, पर डोमेस्टिक डिमांड को किस तरह से सस्टेन किया जाए, रूरल इकोनॉमी
को किस तरह से रिवाइव किया और भी रिवाइव किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी देश में जो इकोनॉमी जो एक ग्रोथ जो है, वो जो टॉप एंड में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, वो ग्रोथ को किस तरह से और भी विस्तार हो उस ग्रोथ का डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा सामने। और उसी को चैलेंज को सामना करने के लिए सरकार भी इसमें अपने आप को समर्पित कर रही है। जी। Well, on an optimistic note, I was just going through the newspapers and there were reports that 15th August, the Independence Day sales saw a real good surge, whether it was the e-commerce platform or otherwise, and that's kind of a silver lining there. Well, we move on to the US markets now. Wall Street's main indices closed lower yesterday as losses in healthcare stocks outshined the gains in Cisco and energy stocks. The Nasdaq Composite Index depreciated 1.2%. The Dow Jones Industrial Average declined 0.85%, while the S&P 500 Index plunged 0.8%. यहाँ पर एक भी हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहाँ जो कह लें कि संकट है, वहाँ भी मुद्रास्फीति की जो बड़ी कह लें कि बड़ा यानी जूझना पड़ रहा है वहाँ नीति निर्माताओं को, वहाँ पर क्या संकट है और क्या निकट भविष्य में दिख रहा आसार? अमेरिकन अर्थव्यवस्था में जो आप कह सकते हैं एक अद्भुत परिस्थिति है। और वो परिस्थिति ये है कि उन्होंने एक साल के अंदर करीबन 12 महीने में उन्होंने 0% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के उन्हें करीबन 5.6% की इंटरेस्ट रेट तक ला दी है। और इन्फ्लेशन रेट को इसी नीति के बदौलत इन्फ्लेशन रेट अब 3% में नीचे आ चुका है। पर इसके आने के बाद भी अमेरिकन जो फेड के जो संचालक जो हैं, वो ये समझते हैं कि वो किस तरह से जो 2% इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का दर किस तरह से वो ला सकें। और इसीलिए वो जो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। बढ़ाया नहीं है अभी तक, बढ़ाने की सोच रहे हैं। पर ये एक तरफ का कहानी है जो मैंने इसके बारे में पहले में ही आपको बताया। और दूसरी तरफ की कहानी है कि जो इकोनॉमी में जो एक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो इस वक्त कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने हफ्ता तक चलेगा, उसके ऊपर एक शंका प्रकट की जा रही है। क्योंकि जो जॉब मार्केट जो है, जॉब मार्केट में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस दिखने को आ रही है और डिमांड में एक उतनी तेजी अब नहीं है। तो इसी कारण जो एक नर्वसनेस अमेरिकन इकोनॉमी में है अभी, वो मैं समझता हूँ इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और ये चाइना का जो प्रॉब्लम जो है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो भी एक अमेरिकन डिमांड की कमी का एक प्रतिफलक है। अगर चाइना की एक्सपोर्ट्स अमेरिका में अगर करीबन मेरे ख्याल से 16 या 20% का गिर जाना, इसका मतलब ये भी है कि अमेरिकन डिमांड की कमी है। प्रोटेक्शनिज्म ही नहीं है इसका कारण जो डिमांड घटना भी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये दोनों कारणों के लिए अमेरिकन अर्थनीति एक नाजुक अवस्था में है। वो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे जो इंटरेस्ट रेट की जो प्रोजेक्शन है और उनकी जो ग्रोथ रेट और ग्रोथ डिमांड की सिचुएशन जो है किस तरह से रिवाइव की जा सके। जी। So this was regarding U.S. economy vis-a-vis China and its exports. What about India, with U.S. inflation stabilizing somewhat, as you're saying, around 3%, and things kind of settling down? Do we expect some surge in exports from our country and thereby some boost in the economy in that sector? Exports are a function of what kind of trade policies any government follows. And as you know that our exports are also highly import-intensive exports, in a sense that for every 1 unit of exports, we have not less than 30 or 32% of imports coming into there. Mm-hmm. So the overall the trade policy approach
and the ability to plug into the global supply chains, they are very critical importance. And as long as we maintain that open trade policy stance and remain open to plugging into global supply chains, I think we should be able to take advantage of the markets that are getting opened up because of the Chinese economy's problems. Right. Let's move on. The total number of Jan Dhan accounts have crossed 50 crore. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched in 2014 with an aim to provide universal access to banking facilities to people across the country. Finance Ministry said out of these accounts, 56% accounts belong to women and 67% accounts have been opened in rural and semi-urban areas. The deposits in these accounts are more than 2 lakh crore rupees. The ministry said about 34 crore RuPay cards have been issued in these accounts free of cost. The average balance in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts is over 4,000 rupees and more than 5 crore 50 lakh Jan Dhan accounts are receiving direct benefit transfer benefits. So when the Pradhan Mantri announced Jan Dhan accounts way back in 2014, we thought it was an innocuous idea that you can open a zero balance account. But we know that it has been a game changer and done away with, brought more transparency, done away with the middlemen and saved the government many lakhs of crores rupees. How would you see the present story in this light? Just those advantages that you listed. There are many other advantages of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme. It is not just a question of opening 500 million accounts, but remember that more than half of these accounts are held by women. Now, to that extent, it's a major initiative because normally what we have seen in a country where the labor force participation rate of women is just about 22%, where if the woman bank account holders in Jan Dhan account is more than 50%. Now that to my mind is a major benefit, and it is not just in urban areas, but it is also in rural areas. So I think that's a big thing. And you also mentioned that the deposit number amount, which was originally supposed to be a zero deposit account, but now they are not really zero deposit accounts. People are using those accounts. And then finally, I would say this connection with the Jan Dhan, Aadhaar and mobile connection, that you have a bank account and you have a mobile connectivity and it is linked to the Aadhaar. It provides a financial payments architecture, and that is probably unmatched in the whole world. Right, let's move on to oil now. Oil prices fell today as China's economic woes results in sign of tight supply. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.77 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $80.10 per barrel when reports last came in. तेल के बाद चलते हैं सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 156 रुपए बढ़त के साथ 58,446 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उधर चांदी के मूल्यों में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही थी। सितंबर अनुबंध वाली चांदी समाचार तैयार किए जाने तक 301 रुपए उछलकर 70,319 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी थोड़ी तेजी दिख रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना $1,923 प्रति औंस पर चल रहा था, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ $23.16 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar. And friends, here, before we close now, here's a reminder of the headlines. Key domestic indices witnessed losses. Sensex settles below 65,000 mark. Nifty ends near 19,300 level. Pradhan Mantri Jan Dhan accounts cross 50 crores in number, and Brent crude hovers around $83.77 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. Namaskar. Market Mantra.